तो हे गाइस, कैसे आप लोग। मेरा नाम है सहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं SB3 स्टूडियो यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बगल में बेल आइकन है, बेल आइकन को दबा दो ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो सो गाइस, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ मैं। तो गाइस, कुछ ही समय पहले ये वाला पिक मैंने अपलोड किया था इंस्टाग्राम पे, तो काफ़ी लोगों का मैसेज आने लगा, भाई इसका ट्यूटोरियल लाओ। तो लो भाई, आपका भाई आ गया एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर के। इसका ये पिक में जो भी बैकग्राउंड एंड PNG यूज़ करूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए लेट्स गो फॉर एडिट्स। बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो गाइस चलते हैं ऐड फोटो में, मॉडल का PNG लेते हैं। तो गाइस HD क्वालिटी में बैकग्राउंड रिमूव नहीं करने आता हो तो आई बटन में ऊपर आ रहा होगा लिंक, वहाँ से वीडियो को वॉच करके HD क्वालिटी में बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हो आप सीख सकते हो। तो गाइस चलते हैं ऐड फोटो में, इंडियन फ्लैग का PNG लेते हैं। बैक साइड कर देंगे इसको, एक और कॉपी यहाँ से कर लेते हैं सेंटर पे करके। तो गाइस इसको इरेजर टूल में जाते हैं, फेस के ऊपर से इरेज कर देंगे। How did you find a way to run from the city of the sun? You could have stayed, it's only over when the day is done. I never knew you was a runner, yeah. I mistook you for a son. It don't matter what we think when it's all over, 'cause this is our last chance to leave it all behind. Raise your voice and raise your power, yeah. This is our last chance to leave it all behind. Raise your voice and raise your power, yeah.
the city of the sun. You could have stayed, it's only over when the day is done. I never knew you was a runner, yeah. I mistook you for a son. It don't matter what we think when it's all over. 'Cause this is our last chance to leave it all behind. Raise your voice and raise your power, yeah. तो गाइस पिक्सेल का काम हो चुका है। अब चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस यहाँ से जाकर के ड्रॉ टूल में 3 डॉट पे जा, तो गाइस यहाँ पे सेव इमेज कर लेंगे। तो गाइस अब चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन। गाइस हम यहाँ पे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आ चुके हैं। तो गाइस चलते हैं अब। यहाँ पे मैं ये थोड़ा बहुत कलर एडिटिंग करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा कलर है नहीं। तो गाइस शेयर बटन पे जाकर के एक्सपोर्ट पर जाकर के सिलेक्ट डाउनलोड कर लेंगे। तो गाइस एचडी क्वालिटी में इमेज डाउनलोड हो रहा है इसीलिए टाइम लग रहा है। तो गाइस हो चुका है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।